We are only talking about the literatures like Prashnamarka, Veerasimhalokanam, and Faladipika, BPHs like this. Okay, so if you see the whole system of remedies, these remedies are divided into these segments like Dev Puja, Vidvat Puja, Homam, and meditation, donation, and Ratna Dharana. Okay, so my point of view of remedies are very simple. So according to me, you can suggest three kinds of remedy to anybody. First is donation, very easy. Sattvic, very simple. And this donation, as per my understanding, is not having any side effect. Okay. But the problem with the donation always work at the beginning of the Dasha. Okay. Why? If you read Bhagavad Gita, Lord Krishna is giving the definition of donation is if you are donating something to someone, you don't keep any expectation with that donation. If you are expecting something from donation, then that is not a donation, that is an exchange offer. Suppose if I am saying your sun is negative, sun is malefic, so do some donation for sun. So what exactly you are doing? You are exchanging something. That is not exactly a donation. So here donation, which is mentioned in our literature, like Prashna mark, all these things. So donation means donation will work definitely, but for donation you can, if you want to see the better result of donation, do donation before the beginning of dasha or at the beginning of dasha. Then you will see best result. Okay. Second kind of remedy is like homa. Homa means the yagya. Okay, Deva Puja, Vidvat Puja. Vidvat Puja means like worship, or if you're visiting any saint or sadhu mahatma. Okay, so all these things comes under the Vidvat Puja. Deva Puja, Yagya, all these comes under the one segment. So these kind of remedies works beautifully for the negative planets, for the malefic planets. If you are facing any difficulties in your life through any negative planets, you can go for Homam, Yagya, Vidvat Puja, Deva Puja. Okay, as per our Shastras. This works very beautifully. Now, the third kind of remedy is Ratna Dharana. Okay, wearing of gemstone remedies. This is very tricky. Okay, as per my understanding, I am telling you my understanding only. So, as per my view, you can wear gemstones only for the positive planets. Okay, not for the negative. Many people are suggesting gemstones. Suppose if your Saturn is negative, so wear blue sapphire or amethyst or iolite. So if you wear, see, gems, you have to understand, like when you do any yagya or any puja, okay, you are attaching your consciousness with that ritual. Okay, when your consciousness attached with that ritual, na, that works in different manner. When you do meditation, you are raising your awareness, you are raising your consciousness. That again works in different manner. But with gemstone, you have to understand gemstone is just a chemical composition. Gemstone is not containing any kind of a consciousness in them. Okay, gemstone is not having consciousness means it can't decide whether how to work in which manner. Gemstone can't decide good and bad. Okay, but yagya can decide itself good and bad, because in yagya your consciousness is flowing, but in ratna dharana is no any consciousness. It's purely a chemical composition. So now it depends upon the astrologer what kind of gemstone they are suggesting for which purpose. If someone is suggesting gemstone for negative planets, negatively placed planets, the planets which is connecting with the 6, 8, 12 or 22nd Drakana, okay, or for any Marka planet, then definitely you are enhancing the energy of that planet. Suppose if that planet is giving you negative result, after wearing any gemstone for that particular planet, you are enhancing the energy of that planet. Are you getting more point? So gemstone should be wear only for the positive planets. Suppose there are two ways of using gemstone. Suppose if you have positive sun in your chart, okay, you can wear ruby. Suppose if dasha is running Saturn,
Okay, but your sun is good in your chart, you can wear ruby, so you can use the energy of Surya sun in your day to day life. Okay, this is application of gemstone, but you should be very aware and very careful before choosing the gemstone, because there are many factors. First, you have to see your chart very carefully. The planet must not connected with the any negative placement or negative things. Then you have to choose the best gemstones, because the quality of gemstone is very important. These are days people are more concerned about the quantity of gemstone. They're more concerned about the size of gemstone. Okay, but gemstone, most important thing in gemstone is the quality. So this Ratna Dharana technique, this gem therapy technique is very tricky thing. You should be very careful while choosing the gemstone. And most important point, you all can write down this thing. These days people are suggesting gemstone on the basis of 159 houses, first house, fifth house, and ninth houses. Okay, this is not a correct way of suggesting a gemstone. You have to consider many other factors. Okay, nakshatra, you have to consider dasha also, because suppose if some planet is placed very positively in your chart, D1 chart, but that same positive planet can give you negative result as per the dasha. Okay, because chart is only a static thing. D1 chart is only a static thing, but it operates under the influence of your dasha and antardasha. Okay, so you have to check your dasha first, and as per that dasha thing, if that particular planet is giving you good result, then you can wear gemstone. And no gemstone is recommended for the whole life. Okay, it will change as per your dasha and transit. So you have to be very careful while choosing a gemstone. But before selecting your gemstone as per your dasha and as per your chart, first you have to look your second house, because second house is the house of gemstone. Okay, you have to also look the karaka of gemstone. Who is the karaka of gemstone? Karaka of gemstone is moon, Chandra. So you have to first see the second house and Chandra. If these two parameters are good, then you can prescribe gemstone for this particular native. Otherwise, gemstones will not give them any result. If Chandra is weak, if second house is afflicted, then you can't expect any good result from gemstone. So what people are doing is they are not considering the Chandra or second house. They are directly wearing gemstones. So if Karaka is not supporting you for that particular remedy, then how can you expect result from this particular thing? Are you getting my point? So that's why first thing you all note down is Karaka for gemstone, then Karaka house for gemstone, then go to next point. Okay, which planets are favorable for you in a chart as per your dasha, then you can wear gemstone for that particular planet. Okay, now as we are dealing with the sun in this session, okay, if sun is afflicted, never wear ruby. Ruby will not give you any result, and ruby is the actual stone. If you go for a substitute for stone for ruby, that is useless. You can wear only ruby in one condition: if sun is favorable for you, then only you can go for ruby. And there is a specific rituals and process of wearing gemstone. Okay, when you set your gemstone in the ring, muhurta is very important. Okay, setting of ring in which day, in which muhurta, that has to be decided as per your horoscope. First thing, after setting of ring, you have to do pran pratishtha of that ring. Like ratna shuddhi is very important. Okay, ratna dharana is very important. These two are different process: ratna shuddhi, ratna dharana. Okay, you have to consider all these factors, then only you can suggest gemstone for any person. I'm not wearing any gemstone. Okay, because there must be some reason. Maybe my karka is not supportive for me, or maybe my second house is not favorable for wearing any gemstone. Okay, now third kind of remedy is yagya, like homam, vidvat puja, and deva puja. So these are the remedies which works in two direction, dual direction. Okay, they can transform the negative energy into positive. Okay, or else they can enhance the positivity into more positive.
That's why if you read any book, Karma Vipak, Karma Vipak Samhita or Karma Vipaka chapter from Prashnamar or Veerasimha Lokanam or BPHS, they are suggesting you remedies, either donation or they will suggest you to do Mrityunjaya mantra. In Karma Vipaka chapter, Prashnamar, they are suggesting you Mrityunjaya Homam for the sun, afflicted sun. If sun is afflicted in your chart, you can do Mrityunjaya Jap. Okay, this is the remedy that Rishi or that Acharya is suggesting in that literature. They are not suggesting you to wear ruby. They are suggesting you to do Mrityunjaya Jap. Or else you can chant Bij Mantra for Surya. Bij Mantra is very easy to pronounce. Anybody can do it. Or else, if you can also do Puranic Mantra for Surya. You can also go for Vedic Mantra for Sun. There is a specific rituals. You have to do Sankalpa and then Mantra Japa and then Dashan Shavan. This is the whole process. So, if Sun is afflicted, if Sun is placed, if suppose if in all these 10 rules, if Sun is afflicted, then you can easily do Surya Japa mantra. Okay, this is the one thing. And uh, Neeraj, there are any other slides or is this last one? I think I this think is, you, I yeah, think you defined everything. I think I covered. Yes, just put that same slide, uh, previous slide one, remedies through gems. 1 minute. There I mentioned that radiation thing, na, that is important. You Yes, can, yes, radiation thing. yeah. Yes. Yes. See, this is a very interesting slide. The slide is showing researchers say that the radiations of gems and those of the signifying planets are almost equal. That's why they have created the system of gemstones. Therefore, the basis of gem therapy is that deficiency in the positive radiation of the planet in human being is compensated by the gems. Please note down this line. They are saying the positive radiations of the planet. If that planet is negative, then don't wear gemstone because we are wearing gemstone to enhance the positivity of that thing in our body because gemstone doesn't have any consciousness, so that they can't decide whether uh, what kind of result we are expecting from gemstone. So it's a duty of astrologer to suggest them good possible gemstone only for positive planets. So positive radiations of planet in human being is compensated by the gems which receive the splendor and the power from the nature and transmit it to the human being. This is just like a vitamin treatment. For example, radiation of sun is 65,000 and that of ruby is 70,000, almost equal. Okay, that's why ruby is a stone for sun. So you can wear ruby only if your sun is positive. Okay, so don't wear gemstone or any kind of gemstones for negative planets. Yes, Neeraj, next slide. This is also about the gemstone. The same thing I already explained. Yes. Next. I think slides are finished, but I will share with you some very simple remedies like uh, that eye disease. Okay, any problems with eye, and that is connected with the sun. So for that thing, there is a very
very special mantra. We call it Chakshusi Upanishad, Chakshushi mantra. If you search on internet, Neeraj ji, if you can type na Chakshusi, CHA, करता हूँ भैया, KO, 1 मिनट। हाँ, Chakshu means eyes. समझ गया। Okay, Chakshushi Upanishad. This is a very beautiful and very powerful mantra for the sun, especially for sun. If you are facing any problem related to your eyes, or migraine, or any kind of problem directly connected with the sun, you can listen or you can at least chant this Chakshushi Upanishad. A small mantra. Do this for 40 days and you will realize the benefits of this mantra. सर एक क्वेश्चन सर। Yes. सर जैसे आपने आंखों के लिए बताया, ऐसे जैसे कईयों ने स्टमक के रिलेटेड, एसिडिटी के रिलेटेड पूछा है, मुझे भी थोड़ी सी ये दिक्कत कॉमन सी है सर। इसके रिलेटेड भी कोई कोई मंत्र या कोई उपाय, समथिंग ऐसा कुछ प्लीज You see, I can बताएं। suggest you a remedy that is mentioned in our literature only. Okay. So, for sun in fifth house or fifth house affliction of sun, like stomach, heart. हाँ Okay, so जी, these two things, Aditya Hriday Stotra is best. आदित्य हृदय सर, ठीक है सर, Stotra. थैंक यू। Okay. And suppose if sun an eighth house affliction, sun a 12th house affliction, हाँ जी, okay, or even in sun in 10th house affliction, in that case, you can chant or you can do Surya Mandala Stotra. सूर्य मंडल। सर एक छोटी सी बात और, जैसे आपने जेम्स के बारे में बताया है Hmm. सर, ऐसा भी कुछ होता है कि जेम्स को हाथ में पहनने से कुछ और रिजल्ट आता है और गले में पहनने से कुछ और रिजल्ट आता है, इसका कोई मतलब है या सिर्फ ये कहीं सुनी देखिए ना बातें क्या हैं? होता है कि सपोज आपको कुछ खाना खाना है, तो खाना हाँ तो जी, पहुंचना तो पेट में ही है। आप चाहे उसको आप मुंह से खाओ चाहे नाक से खाओ, जाएगा तो सही पेट में ही बात ना। है। बट दैट इज हाँ नॉट जी। अ गुड वे। आपको हम्म। पहुंचाना मुंह से ही है ना उसको, हाँ नेचर ने जी। ऐसे ही बनाया है। तो जेमस्टोन विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट इन फिंगर्स। ओके, ठीक है सर, ओके, ठीक ठीक। बट पेंडेंट विल ऑल्सो वर्क। हाँ जी। ओके, पेंडेंट में भी काम करेगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, आवाज कट ठीक गई है, थी। ठीक है सर, पेंडेंट में ठीक है। काम करेगा, बट फॉर पेंडेंट यू हैव टू इंक्रीज द साइज। फॉर पेंडेंट यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ जेमस्टोन। Why? मतलब उसमें बड़ा Because साइज पहनना when पड़ेगा। you wear gemstone, yes, because when you wear gemstone in fingers ना, वो they always हाँ touch in जी। your skin, वो हमेशा constantly touch रहता है स्किन से आपके, तो काम करता है वो। हाँ But जी। when you wear in pendant, suppose आप चल रहे हैं, हाँ दौड़ जी, रहे हैं, तो वो constantly touch नहीं रहेगा आपकी स्किन से। The ठीक है purpose सर। of gemstone is to transmit the energy, है ना। तो वो स्किन से टच रहेगा, तो there is only one way कि आप फिंगर्स में पहन सकते हैं। There ठीक is है सर, another थैंक यू। applications of gemstones is वो आयुर्वेद में भी यूज होता है ना। जेमस्टोन्स, जेम्स। जेमस्टोन्स के भस्म बनाए जाते हैं, रत्न भस्म, उसको आयुर्वेद में सर यूज होता है, आयुर्वेद, डिफरेंट एप्लीकेशन। आयुर आयुर्वेदिक पॉइंट से, जैसे जैसे आपने आयुर्वेद कहा, तो ऐसा कुछ औषधि भी होती है सर कि जो जैसे सूरज को जो करेक्ट कर दे, मतलब सूरज के इफेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव से ठीक कर दे, ऐसा कुछ होता तो औषधि भी होती है होता सर? तो है, होता तो है, बट आई एम नॉट आयुर्वेदिक वैद्य, और वो तो इस तरह से ओपन प्लेटफॉर्म में इसको सजेस्ट करना गलत है। पता लगा मैं सजेस्ट करूं और कोई उसको ब्लाइंडली फॉलो करे, कल को कुछ दिक्कत हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ सही, ओके, सही बट बात है, सही बात देर है। आर, सी क्या होता है ना, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सी देर इज अ प्रॉपर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, हाँ जी। आप अगर सन की आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचना चाहते हैं तो उस सिस्टम को फॉलो करिए, है ना। सूर्य नमस्कार बोला गया था, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। आप किसी का सन ऑलरेडी अफ्लेक्टेड है, वो ऑलरेडी दशा में उनको रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है, अब मैं बोलूंगा सूर्य नमस्कार कर लो, उनको फायदा मिलेगा? नहीं सर। क्योंकि मैक्सिमम जो रेमेडीज होती है ना, वो रेमेडीज देखो, ये मैंने पहले भी बोला था, पतंजलि ऋषि बोलते हैं हेयम दुखम अनागतम। इसका हम्म मतलब होता है कि अवॉइड द डेंजर बिफोर इट अराइजेस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिष। हम्म 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 हम्म, हम्म। प्रॉब्लम आने से पहले उसको रोको, प्रॉब्लम आ गया, आपका कर्म मैनिफेस्ट होने लगा, देन रेमेडीज विल नॉट वर्क। सही बात है जी, Getting my ज्योतिष का तो point? मेन मतलब So यही है। yes, so when karma starts manifestation, when manifesting, na, then remedies will not work for you.
रेमेडीज आर देयर ओनली, यू कैन डू बिफोर द। ज्योतिष का फायदा क्या है? आपको पता है दशा आपकी गड़बड़ आ रही है, पहले आप रेमेडीज करके प्रिपेयर रहें। दशा शुरू प्रिपेयर हो रहे। गई, कर्मा मैनिफेस्टेशन आपका स्टार्ट हो गया है, उसके बाद आप रेमेडीज करेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट? और इंस्टेंटली आजकल लोगों को रिजल्ट चाहिए तुरंत। जेमस्टोन पहनेंगे तो वो कहानियां बन गई है ना कि नीलम पहनते हैं तो रातों रात कुछ हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। जितना हार्मफुल स्टोन नीलम है ना, उससे ज्यादा हार्मफुल स्टोन मोती है। सोचिए मोती क्यों? है जी। सही, हाँ जी, बिकॉज वो कैसे? मून इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर माइंड। नाउ टेल मी, ओ, हु इज मोर हार्मफुल, सैटर्न और मून? मून जी। सही बात है जी। है ना? तो वो जस्ट वो मार्केट में कहानी है, वो चीज है। शनि नीलम बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो बहुत लोग बिना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन, बिना रिकमेंडेशन की स्टोन पहन लेते हैं। मोती तो सर इतने ज्यादा लोग पहनते हैं ना बिना कंसल्टेशन के, तो पहन हर कोई चौथा बंदा मोती पहने तुरता है, मेरे पास फिर रहता मेरे है। पास बहुत लोग आते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता था तो पंडित जी ने मुझे मोती पहना दिया है। हाँ सही बात है, सच्ची ठीक है, बात तो है जी। अब मुझे गुस्सा नहीं आता। क्यों? हाँ। क्योंकि वो सबको निपटा चुका है घर में आसपास, सबको मार पीट के सब बराबर है। तो अब उसे कोई परेशान नहीं करता, तो मोती काम कर रहा है उसके लिए। मोती काम कर रहा है जी, सच्ची बात है जी। तो दैट्स व्हाई वो जेमस्टोन इज नॉट अ गेम। ठीक है, तो जितने आजकल लोग सब बेच रहे हैं ना सब, और बिकॉज ये तो सर बिकॉज लाखों यू के ऑल, स्टोन बन गए। yes, because you all are astrologers, so you can understand the concept. So when we say कॉन्सेप्ट। second house is important before prescribing gemstone, why? That is the karaka house for gemstone, na? सर बहुत चीजें क्लियर हुई सर, मुझे अभी तक कई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आपके इस लेक्चर से ना बहुत कुछ पता लगा सीखने को, तो इसलिए एकदम anybody, दिमाग फिर खुल गया। ये सबको क्लियर होना चाहिए ना। आप कोई गाड़ी लेते हैं, सर पहले आप चेक करते हो ना कि गाड़ी के लिए शुक्र मेरा अच्छा है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल। कि गाड़ी है पैसे ले लोगे आप? आपका फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है, फोर्थ हाउस आपका दिख रहा है कि 6 एंड 8 के साथ कनेक्ट हो रहा है, शुक्र 6 8 के, अब गाड़ी लोग एक्सीडेंट होगा, बिल्कुल नुकसान देगी देगी। नुकसान देगा। सेम यही चीज आप जेमस्टोन्स भी अप्लाई करो। जस्ट चेक कि आपका जेमस्टोन का कारक और जेमस्टोन के हाउसेस कहीं 6 से 12 के साथ तो कनेक्ट नहीं है। सर रूबी का एक बार मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो क्या हुआ, मेरा कन्या लगन है, तो मैंने रूबी पहन लिया, मेरे लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है अपना 12वें भाव का स्वामी बन के। तो सर मैंने जब ना रूबी पहना, तो आधे घंटे 1 घंटे बाद ना मुझे ऐसे लगने लग गया, मेरे सिर में हल्का हल्का ना भार सा लगने लग गया। हम्म। रात तक होते होते सर ऐसे लगा कि जैसे हथौड़ा मार रहा है कोई सिर में, तो हटे ही ना हटे ही ना हटे ना, मुझे समझ ना आए, क्योंकि जब सिर दर्द होता है सब कुछ बंद हो जाता है। फिर एकदम ध्यान आया, तेरी मैंने ये पहना हुआ तो इसका तो नहीं कोई चक्कर, उसको उतारा जी। थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लगा अब ठीक हो रहा है, करते करते रात हुई, फिर सुबह अब सिर दर्द गायब। मतलब ये तो तौबा है। वैसे बार में 8th हाउस और 12th इसके कभी स्टोन मत पहनो। यस डेफिनेटली। एंड अभी जैसे मैंने आपको 3 बताए हैं, चाक्षुषी उपनिषद मंत्र, हाँ जी। आदित्य हृदय स्तोत्र, ये अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को दिया था, ये भी काम ओ, करता है। एंड दैट सूर्य मंडल स्तोत्र, दैट इज गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन। तो सर एक वेरी छोटा सा ब्यूटीफुल। क्वेश्चन, सर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लो सर सर। तो जैसे कोई शख्स स्टोन अफोर्ड ना कर सके, तो मैंने कहीं कहीं ना एक ये भी पढ़ा था कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं तो वो भी कहीं वर्क करती हैं, तो अगर मुझे क्लियरिटी ये वो पॉइंट पे आई नहीं कहीं, तो थोड़ा सा जहां तक ध्यान है, तो आई विल मुझे आई इतना विल ध्यान है। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। पहली बात आपने पूछा कि जेमस्टोन अगर अफोर्ड ना कर, सर जेमस्टोन की क्वालिटी ये है कि आप उसे अफोर्ड ना कर पाओ। ठीक है, हाँ। आपने आपने अफोर्ड कर लिया तो जेम्स किस बात का फिर वो? है ना? ये भी जेम्स बात अगर है। इतना इजीली मार्केट में मिलने लगे तो वो बात ही नहीं। फिर तुम जेमस्टोन क्यों बोलेंगे उस टाइम? पहली चीज है कि सच्ची जेमस्टोन बात। ऑलवेज कॉस्टली। जेमस्टोन हम्म। हमेशा आपको महंगे ही मिलेंगे, सस्ता जेमस्टोन कुछ नहीं हो। सस्ते जेमस्टोन के नाम की चीज कुछ नहीं है। सही बात है जी, वो ठीक है, चाइनीज स्टोन है सारे। यस। एंड सी, in Jyotish they mentioned about the ratna. Okay, ratna हाँ जी। means gems, not gemstone. ओ। There are two things ना, gems is different, gemstone is different. शुक्र के लिए डायमंड होता है, हाँ जी। व्हाइट सफायर होता है, these are gems. शुक्र के लिए एक हाँ। और रत्न होता है, ओपल। ओपल, हाँ जी। ओपल is not a gemstone, that is only a stone. ओ अच्छा, क्या बात है सर। You have to understand different, नाम ही बता रहा है, gems is different, gemstone is different.
Can you call diamond as a gemstone? Diamond is a gem, not a gemstone, na? But opal is a stone. ओ, सही है सर, ये ना क्या वो बात है सर। सलमान खान पहनता हो, क्या है उसका नाम? फिरोजा। रूबी, फिरोजा, फिर फिरोजा, हाँ। फिरोजा इज अ हाँ हाँ स्टोन, नॉट जेम। हाँ, ये उपरतन है सारे। उपरत्न है, उपरत्न काम करेंगे करेंगे, बट ये फिरोजा वरोजा का तो कहीं मेंशन नहीं है ऐसा मैं कुछ। नहीं है जी, मैं खुद ही फिरोजा और ये जो क्या बोलते हैं इसको, हकीक, ये तो मैं कभी रेकमेंड ही नहीं करवाता है। These are a purely stone, but people are selling them as a gemstone. There's a big जेम difference स्टोन, between gems and gemstone, na? So you have to सही understand बात। the difference. So we will do one separate webinar for this concept only. Okay. So again, this is a तो very vast concept. भैया Hmm. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। Yes, yes, yes. वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले ना, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया. So we have to finish this session now. So before finishing, we will take one chart and we will take 2-3 questions and then we will end this session. ये मेरे एक पुराने क्लाइंट थे, उनका मेरे पास 15 सितंबर को एक मैसेज आया कि उनको अपनी मदर के लिए इमरजेंसी कंसल्टेंसी लेनी है। उनकी मदर को कोरोना हो गया था। ठीक है, ये चार्ट में कंसीडर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने स्लाइड बना ली थी, उसके बाद मैं अभी सेशन शुरू करने के पहले ही देख रहा था। इसमें देखना पड़ेगा कि कोरोना चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और फ्लू है। ठीक है, तो एक मिनट। सन जो है वो बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। दिस सन इज इन द सेकंड हाउस एंड इन द जेमिनी साइन। जेमिनी साइन इज द साइन ऑफ चेस्ट, सेकंड हाउस इज द साइन ऑफ नोज, जहां से हम सांस लेते हैं। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ नोज। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये सैटर्न है, वीनस है और मर्क्यूरी है। सैटर्न, वीनस एंड मर्क्यूरी। फर्स्ट we will see that Venus is the lord of sixth house and Mercury, this Mercury is the lord of fifth house, also the second house, the Maraga house, and the Saturn is seated from its own sign and it's seated on the sixth from its own sign, but it is with the Saturn. Now, तो उसको कोरोना हो गया था। तो अब ये देखेंगे कि थर्ड हाउस चेस्ट का है, थर्ड साइन चेस्ट का है, सेकंड हाउस नोज का है, और जो सांस की प्रॉब्लम होती है फ्लू, वो फ्लू होता है क्योंकि सांस की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों को जुपिटर को कंसीडर करना पड़ेगा। ये जुपिटर है। अब अगर हम लोग दशा में जाते हैं तो एक रूल था कि जो दशा चल रही है, महादशा, उससे अगर सन 6 और 8 पड़ जाए, हम लोगों ने सेकंड और 12 का देखा, सेकंड और 12 का हम लोगों ने लाइव एग्जांपल देखा। ये लाइव एग्जांपल में दिखा रहा हूँ 6 और 8 का। जुपिटर की महादशा थी, आप देख सकते हैं यहाँ जुपिटर की महादशा थी और सन की अंतरदशा थी। इसको जुपिटर की महादशा और सन की अंतरदशा में कोरोना हुआ और जुपिटर से सन 6th में बैठा हुआ है। यू कैन सी फ्रॉम जुपिटर सन इज इन द 6th हाउस, द रूल इज applicable and the sign, third sign is for chest. Jupiter is the karaka for breath and for flu. See here, Rahu is connected with this sign, aspecting this, and Ketu is also here. So this combination makes, this combination makes the flu. This is the situation for corona. Now see here, the 15th September. You can see the 15th September is in the Venus Pratyantar Dasa. So Venus is also sitting in the second house and it is the lord of sixth house.
6th house of disease. Okay, here one thing, the sun is the lord of 4th house, the 4th house also the chest part, and the Jupiter is also with the moon. Moon is the natural karaka for 4th house. And again, one thing again, the Mars is aspecting this. Can you all see? Mars is the lord of 2nd house, and the not 2nd house, Mars is the lord of 12th house and the 7th house. 2 1 2